Welcome back all of you. Today we are going to solve illustration number 8, which is on page number 68 in your book. First transaction is goods of rupees 10,000 purchased at 10% rate discount from Taruna Traders. 10,000 के goods purchased with trade discount of 10%. So the amount will be 10,000 minus 10% trade discount. So 1,000. 10% of 10,000 is 1,000. 1,000 is deducted from 10,000. The total amount which is paid to Taruna Traders is 9,000 after deduction of trade discount. So the net amount is 9,000. So the journal entry will be purchase account debit to Taruna Traders account. This is the credit transaction because the name of the person Taruna Traders is available. Second adjustment is goods of rupees 7,000 sold to Gandhi Brothers on cash at 5% trade discount. गांधी ब्रदर्स जो है उसको सेल किया है गुड्स विच इज वर्थ रुपीज 7,000 and 5% cash discount. Here directly cash discount is calculated because the percentage of trade discount is not given. So the amount is 7,000 minus cash discount. Cash सेल किया है इसलिए कैश डिस्काउंट 5% is given. 5% of 7,000 is 350. So the amount which is receivable from Gandhi Brothers is 6,650. So this is the trade discount, not cash discount. ट्रेड डिस्काउंट 5%. यहाँ पे गुड्स ऑफ 7,000 सोल्ड टू गांधी ब्रदर्स ऑन कैश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. यहाँ पे कैश डिस्काउंट इज नॉट गिवन. सो यहाँ पे जर्नल होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैश रिसीव्ड फ्रॉम गांधी ब्रदर्स 6,650 टू सेल्स 6,650. Third one is goods of rupees 12,000 purchased from Mangaldas at 10% rate discount and 5% cash discount. Payment is made in cash. 12,000 के goods which are purchased from Mangaldas. He gave us 10% rate discount and 5% cash discount. First of all, we have to calculate trade discount. 10% of 12,000 is 1,200. Deducted from 12,000, so we get 10,800. On the amount after deduction of trade discount, we should calculate the cash discount, which is 5%. 5% of 10,800, which is 540. 5% of 10,800, we get 540 as cash discount. After deduction of it, we payable cash 10,260. So the journal will be purchase account debit 10,800 to to cash account. कैश हमारे पास से कितनी जाएगी 10,260 and to cash discount which is 540. कैश एंड कैश डिस्काउंट ऑलवेज साथ में रहेगा क्योंकि ये दोनों का प्लस करके ही टोटल अमाउंट ऑफ परचेज हमें मिल पाएगी. सो कैश एंड कैश डिस्काउंट ऑलवेज टू बी टुगेदर. Thereafter, goods of rupees 11,000 sold to Viral at 10% trade discount and 5% cash discount. Payment is received in cash. 11,000 के goods which are sold at 10% trade discount. 10% of 11,000 is 1,100 deducted from 11,000, so we get 9,900. On this amount we should calculate cash discount.
5% of 9,900 is 495. So we get 9405, the amount after reduction of cash discount. This is the sale to Virat. So we get cash from Virat 9,405. We give him cash discount. So this is the cash discount. And to sales the whole amount 9,900. So the journal will be cash account debit 9405, cash discount because हमने उसको डिस्काउंट दिया which is expense for business, that's why cash discount is debited. Cash discount debit 495 to sales account which is 9900. Clear? Next is goods of rupees 8,000 purchased from Bihari Brothers at 10% trade discount and 10% cash discount. Paid half the amount immediately by cash. Now this is the important point. 8,000 के गुड्स जो है परचेज किए, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 8,000, 10% trade discount, 800 is deducted from 8,000, we get 7200. This is the amount on which we have to calculate cash discount, but cash discount is given only on cash payment or cash income receivables. अगर हमें कैश में मिलती है पेमेंट तो हम देंगे, या तो फिर कैश में हम पेमेंट करते हैं तो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा. द अमाउंट विच इज पेड इन कैश ओनली. हियर बिहारी ब्रदर्स ने सिर्फ हाफ अमाउंट जो है वो कैश में दी है, तो हम भी इसके ऊपर कैश डिस्काउंट देंगे जितनी कैश हमें मिली है उसके ऊपर. सो वी हैव टू हाफ द अमाउंट 3600, half of the amount after deduction of trade discount. Net amount के हम half amount कर देंगे, half we received in cash, so we give cash discount on the half amount only. Cash discount is 10%, so 3600 का 10% 360, after reduction of cash discount 3240 we have to pay. आई रिपीट अगेन, बिहारी ब्रदर्स के पास से हमने 8,000 जो है परचेज किया, उन्होंने हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया. अब हमें उसको पे करना है 7200 में से हाफ कैश में पेमेंट हम इमीडिएटली कर देते हैं, तो दे गिव अस कैश डिस्काउंट ऑन हाफ अमाउंट ओनली. सो वी हैव टू पे 3240 एंड दिस इज the amount which we have to pay Bihari Brothers. So the journal entry will be purchase account debit 7200, purchase account debit 7200 to cash account 3240 to cash discount account 360 to Bihari Brothers account 3600. This is the journal for this transaction. I repeat, purchase account debit 7200 to cash कितनी गई हमारे पास से 3240, to cash account 3240, to cash discount account 360, to Bihari Brothers account 3600. Thereafter goods of 15,000 sold to Bimal at 10% trade discount. If due is paid up to 20th July, 10% cash discount will be allowed. बिमल को जो है 10,000 के गुड्स हमने सेल किए, 15th डेट को 10,000 के गुड्स सेल किए at 10% trade discount, and the condition is if he pays whole amount within paid up to 20th जुलाई. अगर 20th जुलाई तक अगर वो कैश में पेमेंट करता है तो ही हम उसको कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे. सो हियर द अमाउंट ऑफ नेट अमाउंट जो है वो ही कैलकुलेट होगी, नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. सो यहाँ पे जर्नल एंट्री विल बी विमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, द अमाउंट इज 13,500. उसके बाद है from the sale of 15th July
Vimal has issued check for an half amount which is deposited in bank. अब 18th डेट को वो क्या कर रहा है, हाफ अमाउंट का चेक जो है वो हमें दे रहा है, तो हम भी डिस्काउंट किसके ऊपर देंगे, ओनली ऑन हाफ अमाउंट. सो 13,500 का हाफ 6,750, उसके ऊपर 10% कैश डिस्काउंट, सो वी गेट 6075. इतनी हमें कैश मिलेगी फ्रॉम विमल. नाउ द जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट. उसने क्या दिया है, चेक दिया है, सो द कैश की जगह पे क्या डेबिट होगा, बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विमल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट 6075, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 675 to Vimal account 6750. Thereafter, Vimal has settled the remaining balance in cash. अब उसके पास से कितना बाकी था, ये, so उसने क्या किया, सेटल कर दिया with cash. So the journal entry will be cash account debit to Vimal account. Cash comes in and the giver of the amount is Vimal. That's why cash account debit to Vimal account. उसके बाद है ₹1020 was due from Sunita. She paid 1000 as a final settlement. सुनीता के पास से हमें 1020 रुपीज लेने थे, उसमें सिर्फ पे किए 1000. So 20 rupees is allowance or discount. So the journal entry will be cash account debit 1000, allowance account debit 20 to Sunita account 1020. Thereafter, a check of ₹800 was issued to Vaishali as a final settlement for the due of 810. 810 हमें पे करना था, हमने पे किया 800. So 10 rupees is discount. So the journal entry will be Vaishali account debit. Who is the receiver of the money? Vaishali. Vaishali account debit 810 to cash account only 800 we pay. So cash account will be credited with the amount 810 rupees is discount to discount account, which is income for us. That's why it is credited. So this is the transactions of trade discount, cash discount and allowance. I hope कि ये सब आपको समझ में आ गया है. नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजेक्शंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए, इस सब को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए. थैंक यू वेरी मच.